Welcome to the Change and Nature's Paradise at Summer Shell Natural Farms, रामनगर, the pride of पूर्णिया एंड बिहार। परिवर्तन का प्रतीक एवं पर्यावरण संतुलन का पर्याय बन चुका हमारा ये सहज समर शेल प्राकृतिक फार्म रामनगर से मैं आपका मित्र हिमकर मिश्रा अपने आज की इस वीडियो प्रस्तुति में आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आज हम अपने कोसी वाले ज़मीन पे हैं और हमारे पीछे आप देखेंगे ये कोसी नदी है, इसे कारी कोसी कहते हैं। पानी थोड़ा सा डार्किश रहता है और बिकॉज ऑफ दिस, और ये जलकुंभी है जिसे यहाँ स्थानीय भाषा में इसे घेघवा कहा जाता है। ये नेचुरल मैन्योर के रूप में भी यूज़ करते हैं लोग। इट्स वेरी गुड एज अ मैन्योर, बट जहाँ तक नदी का है ये पानी को रोकता है, पानी को डेड कर देता है ये। और अंदर में पानी काफ़ी है, करीब 10 फीट से कम पानी नहीं होगा यहाँ पे। और यहीं से कोसी जो है बरसात के समय में इट ओवरफ्लोज। आप अभी भी देखेंगे कि आप ये इस बार बारिश काफ़ी हुई थी तो कोसी जो है, कारी कोसी का जो जल है वो अभी भी इट हैज़ ओवररन इट्स बैंक्स एट मेनी प्लेसेस। और जो लो लाइंग एरियाज़ है फील्ड से उधर भी हम लोगों के कज़न्स का है, तो वो अभी भी वाटर में पानी में है, वाटर लॉक्ड है और उसे भी सूखने में भी महीना भर का टाइम और लगेगा उसमें। तो वो बेसिकली हर एक साल 6 महीने तक उपयोग में आता है और 6 महीने पानी में डूबा रहता है। बट दिस इज़ व्हाट इट्स अ वेरी फर्टाइल स्ट्रेच ऑफ द फार्म। और यहाँ धान की खेती बहुत होती है, अगानी धान भी होती है जो नॉर्मल सामान्यतः लोग बनाते हैं, जो खरीफ क्रॉप के रूप में है, और एक रबी के रूप में यहाँ पे गर्मा धान लोग लगाते हैं यहाँ पे, जो अभी लगाने का सीज़न है। तो गर्मा धान के लिए अभी लोग अपने मैदान तैयार कर रहे हैं। What we are doing is, I have come here after 1 year, और पिछली बार भी आए थे तो we had planted lot of vetiver there। आप देखेंगे कि उसका कलर जो है वो मैरून हो गया है या ब्राउन हो गया है, डार्क ब्राउन टैंड हो गया है बेसिकली। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस जलकुंभी जो उसके अगल बगल है वहाँ पे, तो उसके कारण ये, तो वी नीड टू प्रून इट। जैसे हम लोग काटेंगे तो फिर उसका हरा ही आ जाएगा उसमें। सो दैट इज़। एंड इधर भी हम लोग इधर जो हम लोग हमारी 2-3 बीघे ज़मीन है यहाँ, इसमें भी हम लोग खस का विस्तार कर रहे हैं यहाँ। तो नाउ व्हाट वी विल डू, दिस इज़ द कोसी एज आई टोल्ड यू। और यहाँ पे जो फिशरमैन कम्युनिटी है जिसको हम लोग गोढ़ी कहते हैं यहाँ स्थानीय भाषा में, इन लोग का यहाँ मछली पालन का भी ये होता है। और गोढ़ी के अलावा यहाँ मुसहर लोग भी अपना जो मुसहर जाति के जो हमारे बंधु हैं यहाँ, वो लोग भी मछली पालन से अपना जीविका चलाते हैं यहाँ पे। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी शैल वॉक टूवर्ड्स द area where we are planting, extending vetiver in the other fields। जब तक कि खरीफ का सीज़न आएगा उस समय तक हम लोग यहाँ पे एक्चुअली इसे हम लोग नर्सरी के रूप में भी कर रहे हैं, उसको विकसित कर रहे हैं। और वेटिवर एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन माई मेनी वीडियो ब्लॉगिंग दैट इट इज़ द मेनस्टे ऑफ अ फार्म, इज़ द फाउंडेशन ऑन विच आर द फार्मिंग मॉडल एट समर शेल नेचुरल फार्म्स इज़ लेड। सो ये धान की जो कटाई हुई है जो अभी, तो ये लैंड फ्री है और ये भी, इसमें भी हम लोग खस लगाएंगे। दिस इज़ आवर लैंड ओनली। और इसमें हम लोग अभी धान की कटाई के बाद हम लोग इसमें अभी खस लगाने वाले हैं, जिसे हम लोग वेटिवर कहते हैं। और मैं आपको बताऊं एक बात, ये ज़मीन अभी भी बहुत ही स्लशी है। इट्स वेरी स्लशी, जिसे हम लोग कादो टाइप की ज़मीन है ये, जो स्थानीय भाषा में कहते हैं, बट वेरी स्लशी। और तो इसमें क्या है कि अभी खस लगाने में और बहुत डैम्पनेस है, बहुत मॉइस्चर है इसमें, पानी अभी तुरंत रिसीड करके पानी सुखाई है यहाँ पे। तो जस्ट आइडियल फॉर वेटिवर। वेटिवर नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर इन द इनिशियल स्टेजेस। सो अगर जहाँ हमारे जो ड्राईलैंड्स है, जहाँ पे हम लोग फ्लड इरिगेशन यूज़ करते हैं, वहाँ पे वी नीड टू वाटर द वेटिवर एवरी 15 days इनिशियली फॉर इट टू एक्चुअली फ्लरिश एंड ये। And vetiver is going to do a lot of good to this. I remember, I will thank Dick Grimshaw, who is the former Asia head agriculture of the World Bank. Now he's an elderly person, but he wrote to me once that he was very happy that we have begun to realize the importance of vetiver here. When he was in charge of the Asia head, as an Asia head of agriculture for the World Bank, he said in the 80s, when he was here in the 90s, he did not get the type of support from the Indian government, or there was not much excitement about it. But subsequently all studies have shown
that even in the rice belt, if you use the bunds, और बंद के चारों तरफ आप अगर खस लगाते हैं और बीच में धान लगाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती तो है ही, और साथ साथ जो राइस के साथ जो स्टेम बोरर होता है या जो भी अन्य इसमें जो लगते हैं जो, तो आपको उसमें कीटनाशक और खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसा रिसर्च शो करता है डिक ग्रिमशॉ के हिसाब से. थैंक यू डिक फॉर एनलाइटनिंग अस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ वेटिवर, एंड we continue to grow and extend our today we have mobilized all the extra girls who are not our regular workers also to do it, because we want to finish it in a day's time, or at the most in 2 days time. And as you can see here, they are all planting vetiver and Subodh ji dekho ye, and we have to cover the entire stretch today. Let's see how far we succeed. And here as you can see, they have in the last 40 minutes or so, we have progressed quite a bit here, and I'm happy that we have been able to do it. And all these girls, look aage se. And as you can see, as I'm walking in the fields here, you can see how slushy and how wet the soil is here. And this is all because we have had extended rainfall this season, and the soil is very, very wet. It's very slushy, and these are all jalkumbis. And otherwise they are a menace in terms of they stop the flow of water. And I think it's because of this jalkumbi that the Kosi is known as Kari Kosi. I might be wrong, but to my mind, because of the water being still here, because of this jalkumbis, which is known as Ghegwa in local parlance, because of this, and this is common everywhere in the Kosi belt. And as you know, the Simanchal belt of Bihar is essentially the Kosi belt here. Kosi meets the confluence of Kosi and Ganges is also near Kursela here, around 50-60 kilometers from here. But this entire stretch of land is very slushy. It depends on how Kosi behaves in the monsoons, and here, because of good rainfall, good on the river banks, river overrunning its banks, you have a very, very good rice harvest in area essentially. But in the low-lying areas, you always have the risk of the water not receding in time, and much of the crop is destroyed. Coming back to what we are doing here, you can see my girls here who are all coming. We have some extra girls here who are all just planting and extending our vetiver. Yeah, they have done quite a great job. They have done a wonderful progress here, and I'm very appreciative of their efforts. Like you have our star workers, Budli is there, Munni is there, Khushbu is there, Anju is there, Tuli is there, Shobha is here. So they are our regular workers here, and they've done quite a fast job here. And you can see how tractors, when they move here, they how bad their influence is, how they disturb the soil patterns here. And these are the local boys here. इधर आओ. These are the local boys जो यहाँ के हैं. क्या नाम है तुम्हारा? मनीष कुमार. कहाँ यहाँ रहते हो? गोरी हो तुम भी? अच्छा, तुम लोग भी गोरी हो. आओ इधर आओ. तुम्हारा का नाम क्या है? नीतीश कुमार. अरे यार, ये देखिए, ये एक नीतीश कुमार यहाँ भी है. तो अब हमारे पास 3 नीतीश कुमार हैं, है ना? और तुम्हारा नाम क्या है? सावन कुमार. ये तो अभी तो भादव, अभी तो मार खाने वाला है, पोस्ट चल रहा है अभी. चलो, तो तुम लोग यहीं आसपास रहते हो? कहाँ रहते हो? अच्छा, यहाँ पे. ओके, ठीक. चलो. So what we are, jokes apart, in a lighter vein, we had some lighter moments now. But let me tell you, in 2 days from now, you have the Paush Purnima fair, Mela at Ramnagar. It's a very big occasion. You have people coming from 200 villages in the surrounding areas, and they all converge at the
the temple, that Shiv temple, Prachin Chiteshwar temple, which is known as Ujla Math. Ujla Math या Ujra Math, they say in local parlance. So Ujla Math is there. There are a lot of myths about the Ujla Math. One reason being that one of the earlier, princesses of Raj Baneli some centuries ago had passed away there, and it was built on her funeral pyre. Once the ये उनके चिता पे बनाया गया था, तो उजला दाई उनको कहा जाता था. और दूसरा चीज़ है कि ये प्राचीन चितेश्वर मंदिर भी कहते हैं. तो विदाउट गोइंग और विदाउट गेटिंग इनटू दैट controversy or debate about the origin of the temple there, how the temple was built, it's a very big affair, and all from the Dyori and the rich farmers here and people at large, they come, they set up stalls. There's a merry-go-round, there is a giant's wheel, and the traditional village fair which you see often in movies which they recreate. That's a link between tradition and modernity. And Ramnagar, I tell you, is actually the hub where tradition meets modernity. And I'm very happy that Ramnagar is the center, occupies center stage in terms of where people live in deprivation, more or less. They're very poor people here. There's a lot of migration of the villages from Ramnagar to Punjab and Haryana, and but their women, most of them, they stay back here, and they get a money. Some of them get a dignified work at our farm, and we are happy that we have them here. And let me tell you, we are tomorrow 17th and 18th, because of this Posh Purnima Mela, which is generally known as Pusi Purnima ka Mela. यहाँ पे I was corrected last year when I made that video on the Posh Purnima Mela. They say it's essentially Posh, but I prefer to use the local parlance here, because then you can relate more with the people of your village. So here in my village, I am more at ease with how the people behave here, and I relate to them, and they relate to me. So that's one thing here. So we'll end the video here, and there on the other side you can see a few the boys and the women segregating the vetiver slips. Or so this is a whole day process. We are having lunch at the farm only. So we are having samosas for lunch, and it's more like a picnic today actually. Yeah, for the girls, we use the tractor trailer. They all climbed onto the trailer of the tractor, and they all came here laughing, bantering, smiling, full of high spirits. So that's what our farming is all about, where we integrate the workers with ourselves, and that tells you a very amazing story that goes on at Commercial Natural Farms Ramnagar. With that, I would like to call it a day, call it off. And before I end, let me tell you what I tell you every day: keep appreciating, keep criticizing, but don't forget to watch the regular video updates from Commercial Natural Farms Ramnagar, the pride of Purnia and Bihar. Today, this farm is the pride of Purnia and Bihar, but the day is not far off when this farm shall be the pride of India as well. And with your support and good wishes, we also look forward to establishing this beautiful farm onto the global center stage. हिंदी के दर्शकों के लिए हमेशा की तरह प्रशंसा कीजिए, आलोचना कीजिए, सुझाव दीजिए, पर देखना मत भूलिए, क्योंकि समरशेल प्राकृतिक फार्म रामनगर आज पूर्णिया एवं बिहार का गौरव तो है, पर आने वाले दिनों में ये पूरे देश का गौरव होगा. और शायद वो दिन भी दूर नहीं जब हम अपने इस खूबसूरत सहज प्राकृतिक फार्म को विश्व के मानचित्र पर भी सफलतापूर्वक स्थापित कर देंगे. Thank you very much for being such a wonderful and supportive audience, and we shall meet again tomorrow with a new update. Thank you very much.